Trigonometry. Trigonometry. Exercise 8.1. Class 10th. Chapter 8. Question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। शुरू करते हैं। हेयर सॉल्यूशन। लेट टू राइट एंगल triangle angle E and angle B acute angle and angle B and Q, angle A and angle A and B इक्वल करना है एक्यूट एंगल। सो हेयर वी सॉल्व। So we make triangle this is a A angle, this is B angle. Here A and B acute angle, so that A and B equal. So here name is A, B, C and D, and here E or F. Here given angle A and angle B acute angle and cos A and cos B. We now cos A is equal to adjacent side to angle A oblique hypotenuse So cos A is equal to CA oblique DA. Here side adjacent to angle A, and here side opposite to angle A. So same cos B is equal to
EF, EB oblique EFB. So here this is a 90 angle, this is also 90 angle. So here given that cos A is equal to cos B, so CA oblique DA oblique EB oblique FB. Here DA interchange EB, so CA oblique EB and DA is equal to FB. Here K is a constant value, constant. So CA is equal to EBK and DA is equal to FBK. So we make figure again. Here D A C and here F E B. So this is figure. CA is equal to EBK and DA is equal to FBK. So here CD value oblique FE, CD is equal to DA minus CA. And again down में FE is equal to FB minus EB. So here CA value given, DA value given, so we put up here DA value FB square K value put CA and DA. So CA FB तो CD FE. Here K is common, FB square EB square FB square minus EB square is equal to CD upon FE. So these value cancel
this value is cancelled, so CD upon FE is equal to this value CD FE CA EB and DA is equal to FB. So here we look CD upon FE CA oblique में EB and DA oblique में FB proportional ratio here side similarities triangle DCA similar triangle FEB similar triangle. So here angle A is equal to angle B, hence it's proved angle A is equal to angle B. सो हमने इसे आसानी से समझा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा 7/8 evaluate 1 plus sin theta bracket close and bracket 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta bracket close and bracket 1 minus cos theta, and second is cot square theta. Here we क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें cot थीटा की वैल्यू 7/8 दिया है, जिसको हम और 1 इवोल्यूट करेंगे 1 and 2। सो स्टार्ट करते हैं। हेयर सॉल्यूशन cot theta is 7/8. We make triangle this is theta and this is theta. So here we now adjacent side adjacent to angle A oblique side opposite to angle A is equal to, naming is that A B C हाँ बोलो। अच्छा लगवाता हूँ, रुक जाओ। अरे लगवा देंगे, अभी थोड़ी देर टाइम है अभी, रुक जाओ थोड़ी देर। यार रुक जाओ यार, तुम भी रुक जाओ नहीं सकते क्या थोड़ा सा? Here 1 plus sin theta and 1 minus sin theta oblique 1 plus cos theta and 1 minus cos theta is equal to
1 minus sin square theta, 1 minus cos square theta. So here sin theta value is that 1 oblique 1 minus sin theta value 8 oblique root 1113. Here 1 by 1 cos theta value is 7 oblique 1113. So here 1 1 8 8 is 64, 1113. Here 1 by 1 7 7 is 49, 1113. So here 113 minus 64 oblique 113 minus 49, again 113 minus 64 oblique 1113 and 113 minus 49 1113. So 113 to 113 cancel, 13 49 oblique 64. This is the value of 1 minus sin theta oblique 1 plus 1 minus cos square theta 49 oblique 64. Here cot theta second cot theta. So cot theta is adjacent side adjacent to angle A, side opposite to angle A, which is here 7 side adjacent 7K oblique 8K. KK cancel, 7 by 8 square. तो cot square theta is equal to 49 oblique 64. Hence, which are proof first and second, we have proof. Here question number 8. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A oblique 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. So we solve it. Question number 8 here 3 cot 4. So start करते हैं. Solution 3 cot A is equal to 4. So cot A 4 oblique 3. Cot A is equal to side adjacent to angle A oblique side opposite to angle A, which is
4K oblique 3K. Here let this is triangle, this is theta, and this is A, B and C. Side adjacent to angle A, side opposite to angle A. Here this is 4K and this is 3K, 4 oblique 3. So here hypotenuse square is equal to height plus base. Hypotenuse CA, height CB, BA. CB is 3K, BA is 4K. 9K square 16K square is equal to 25. K square is equal to CA. So CA is equal to 25 into 25 into K square. So 5K CA. CA is equal to 5K. So here sin A is equal to side opposite to angle A oblique hypotenuse so 3K oblique 5K is equal to 3 by 5. Cos A is equal to side adjacent to angle A oblique hypotenuse, which is equal to 4K oblique 5K is equal to 4 oblique 5. Here make figure again. Five K A C B side opposite to angle A, side adjacent to angle 4K and this is 3K. Here tan A, so tan A side opposite to angle A, side adjacent
to side angle A, which is equal to 3K oblique 4K, यानी 3/4. We check here 1 minus tan square A oblique 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. So 1 minus 3/4 oblique 1/1 plus 3/4. So here cos की वैल्यू, जो हमने cos A की वैल्यू निकाली थी 4/5 स्क्वायर माइनस sin A की वैल्यू 3/5 square. So here here 1/1, 3 3 is 9, 4 4 is 16, 1/1 plus 9/16, 4 4 is 16, 5 5 is 25, minus 3 3 is 9, 5 5 is 25. So 16 minus 9 and 16 plus 9, 16 minus 9/25. So 16 goes, 16 minus 9 7/25. Here 7/25. Left hand side equal to right hand sides. So left hand side is equal to right hand sides. So yes, it is equal. Yes, it is equal value. Hence हमने क्वेश्चन बहुत आसानी से समझा. tan थीटा को 3/4 निकाला, वैल्यू रखी हमने 3/4, 3 3 is 9, 4 4 16, 1/9/16 and 4 16 25, 3 3 is 9/25. सोल्व आउट किया इसको, 16 में 16 में 9 गया 7/25, 16 में 9 गया 7/16 होता, 16 से 16 कैंसिल कर दिया तो 7/25. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमने क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसानी से समझा कि ये हमारा यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है. सो हमने क्वेश्चन नंबर 8 ईजिली सॉल्व आउट किया. सो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया बहुत ईजी से. इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व आउट किया ईजिली, जिसको हमने आसानी से समझा एंड जिसका हमारा आंसर सेम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को ईजिली किया हमने. क्वेश्चन नंबर 6 किया, जिसमें हमने वैल्यू ए बी इक्वल है एंड डी एंगल एफ एंगल के भी इक्वल होगा. सो हेंस प्रूव्ड. या थैंक यू
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। बच्चे इसे प्रैक्टिस में रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।